Everyone, welcome back to my channel English with Abhay. In this study present perfect tense and we are going to solve the worksheet. So let's start. Okay, so present perfect worksheet को solve करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन. ध्यान से समझने की कोशिश करेगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं. दिस इज़ फर्स्ट पर्सन, दिस इज़ सेकेंड पर्सन एंड दिस इज़ थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बोल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन. यू पीपल आर लिसनिंग, सो यू बिकम द सेकेंड पर्सन. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर डिस्कशन, दैट इज़ थर्ड पर्सन. ठीक है, इसमें फिर हमें ध्यान रखना होता है, इसमें सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड ट्राई टू आंसर ऑल दिस थिंग्स. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल इज ऑल्सो यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ही, शी एंड इट, थर्ड पर्सन प्लूरल इज दे. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हियर. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें इतना हमने लास्ट वीडियो में देखा था पास्ट परफेक्ट में कि हैड का यूज़ हमें करना था, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट. सो वी नीड टू यूज़ हैज़ एंड वी नीड टू यूज़ हैव. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हमें हैज़ कब यूज़ करना है और हैव कब यूज़ करना है. तो इन सभी के साथ, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है हैव, और ही शी इट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा यूज़ होगा हैज़. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट. आई होप ये वर्कशीट सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है. सो लेट्स बिगिन. शी ट्रैवल टू सेवरल कंट्रीज इन यूरोप. शी के साथ क्या यूज़ होगा, हैज़. शी हैज़ ट्रैवल्ड. ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर ये पास्ट परफेक्ट से सेम फार्मूला पे काम करेगा. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो द फार्मूला इज़ व्हाट, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, एंड एज इट इज़ अ परफेक्ट, so always we need to use the third form of the verb. So this becomes your formula. So I think you all are set to solve the worksheet. So let's begin. They dash finished their homework already. They के साथ क्या यूज़ होगा, have. They have third form of finish is finished. I dash never see such a beautiful painting before. I के साथ क्या यूज़ होगा, I have, एंड यहाँ पे नेगेटिव है, आई हैव नेवर, सी सॉ सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग बिफोर. फोर्थ क्वेश्चन, वी डैश ईट एट द रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स. वी हैव ईट, एट, ईटन. वी हैव ईटन दैट इन दैट एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स. फिफ्थ क्वेश्चन, ही नॉट मीट द न्यू मैसेंजर येट, सॉरी मैनेजर येट, आई बेग योर पार्डन. ही has not, meet का थर्ड फॉर्म, meet, met, met. He has not met. The children dash break the window. The children क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, तो क्या आएगा, have. Children का सिंगुलर फॉर्म होता है child. The children have break, broke, broken. The children have broken the window. She dash learn how to play the piano. She has learned, either you can write down she has learned or she has learned, both are correct. We dash visit the museum several times. We have visited the museum several times. They dash live in the city for 5 years. They have lived. They have lived in the city for 5 years. 10th one, I dash just receive a letter from my friend. I have just received a letter from my friend. The cat dash catch a mouse. The cat has
Catch, caught, caught. The cat has caught a mouse. You dash read this book before, haven't you? I want you to solve this question. Write your answer in the comment box. I hope you have enjoyed this worksheet, and please make sure that you like, share and subscribe the channel for more worksheet. Thank you so much.